Hello everyone, welcome to Engineers Career Point. मैं चंद्रशेखर, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एट इंजीनियर्स करियर पॉइंट। आप सब लोगों को पता है सून जेई का नोटिफिकेशन फ्रॉम JKSSB JE का नोटिफिकेशन आने वाला है। ये इलेक्ट्रिकल वाला नोटिफिकेशन में लगभग 93 वैकेंसीज होने वाले हैं। कौन सा टॉपिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के लिए, और उनमें से एक टॉपिक उठा के मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ फ्रॉम द सब्जेक्ट पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में मैं एक टॉपिक उठा के मैं पढ़ाने वाला हूँ। पावर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी एग्जाम ले लो, आप पावर सिस्टम से क्वेश्चंस आई कैन से लाइक 20%, 10 to 20% of the questions will be from the subject power systems. Power systems and electrical machines, ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। पावर सिस्टम में मैं पहले सिलेबस डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, या पावर सिस्टम में सिलेबस डिस्कस करता हूँ। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं डिस्कस करेगा। उसके बाद वो वाला टॉपिक में पिछले सालों में इलेक्ट्रिकल वाले पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। पावर सिस्टम्स सिलेबस ये रहेगा। पहला वाला पार्ट होगा जनरेशन, पावर जनरेशन। सेकंड पार्ट होगा ट्रांसमिशन। थर्ड पार्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ पार्ट होगा फॉल्ट एनालिसिस। राइट। फिफ्थ वाला पार्ट होगा स्टेबिलिटी। सिक्स्थ पार्ट होगा लोड फ्लो स्टडीज। सेवेंथ वाला पार्ट होगा प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। राइट। इसके बाद और छोटे टॉपिक्स पे लाइक इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, तो ये पावर जनरेशन में कवर हो जाएगा, ठीक है। और लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, वो भी लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी रहता है, वो एक छोटा वाला टॉपिक है लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। लेट मी राइट द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे लिखा हूँ मैं लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। सर इतने टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स हैं, इसमें से कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है? I can say like all topics are equally important, but कम से कम 3 to 4 questions you get from this fault analysis part. 3 to 4 questions minimum 3 to 4 questions you get from the fault analysis part. That much important that part is, उतना important है। आज की क्लास में मैं fault analysis में एक टॉपिक लेके पढ़ाने वाला हूँ। वो टॉपिक है पर यूनिट सिस्टम। तो पर यूनिट सिस्टम से पक्का एक क्वेश्चन तो आएगा। क्वेश्चन आया कि नहीं आया, लेकिन पर यूनिट सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है पूरा पावर सिस्टम के लिए। अगर आपको पावर सिस्टम अंडरस्टैंड करना है तो पर यूनिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पर यूनिट सिस्टम सब टॉपिक ऑफ फॉल्ट एनालिसिस। पर यूनिट सिस्टम सब टॉपिक ऑफ फॉल्ट एनालिसिस, राइट। पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम, ये है सब टॉपिक ऑफ फॉल्ट एनालिसिस। देखो द नेम इटसेल्फ इज पर यूनिट सिस्टम। सी ये टॉपिक का जरूरी क्या है, क्यों पढ़ रहा है, एक दो वर्ड्स सेंटेंसेस में हम समझेंगे। उसके बाद डायरेक्टली वी विल एंटर इनटू सब्जेक्ट। आ जाओ यहाँ पे। आ जाओ। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन सिंपल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। वन सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। देयर इज अ सिस्टम in that voltage drop is 10 volts. There is a system in that voltage drop is 10 volts. Delta V says that voltage drop is 10 volts. There is another system where voltage drop is 100 volts. मैं अभी ये दोनों वोल्टेज ड्रॉपों में कौन सा ज्यादा है पूछने से ना, आप विदाउट थिंकिंग यू विल से दैट डेल्टा V2 is high 100 volts। लेकिन ये समझो कि यहाँ पे और भी डेटा दे रहा हूं मैं। टोटल अप्लाइड वोल्टेज इज ऑफ 100 वोल्ट। देखिए अभी प्रॉब्लम देखिए,
मैंने पहले ये वाला डेटा नहीं प्रोवाइड किया। पूरा वोल्टेज हम जो दे रहा है, टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट्स है, उसमें 10 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा। यहाँ पे हम वोल्टेज दे रहे हैं 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट में 100 वोल्ट ड्रॉप हो रहा। नाउ टेल मी व्हिच वन इज हाई ड्रॉप। देखो अगर मैं ये वाला डेटा नहीं प्रोवाइड किया तो आपको लगेगा कि यही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप है, ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि 100 इज मोर व्हेन कंपेयर टू 10। बट देखो अभी 100 में 10 ड्रॉप हो रहा तो कितना परसेंटेज और कितना पर यूनिट ड्रॉप हो रहा। देखो पर यूनिट ड्रॉप, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, व्हाट डज इट मीन बाय पर यूनिट। आउट ऑफ 100 कितना जा रहा है, 100 में 10 जा रहा है तो कितना आएगा ये 0.1। मतलब हर एक 1 वोल्ट में 0.1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा पर यूनिट, यूनिट मींस 1, पर एवरी 1 यूनिट, या 0.1 volt for each 1 volt is the drop. Now per unit voltage drop 1 it is. Now let me calculate per unit voltage drop 2. Per unit voltage drop 2 is equal to 100 divided by 10 to the power of 4, it will be 0.01. देखो यहाँ पे क्या पता चला आपको, यहाँ पे क्या पता चला आपको कि हर एक 1 वोल्ट में 0.01 ड्रॉप हो रहा। बताइए कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। ये ज्यादा है, ये कम है कि नहीं। What the point here is, if I give you directly voltages and currents to you, we are unable to get some conclusion. Directly voltage, current, resistance, reactance, impedance, ये देने से आप एक मीनिंगफुल करेक्ट कंक्लूजन नहीं ला सकते, क्योंकि वोल्टेज लेवल्स डिफरेंट है। देखो टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली एट दिस सिचुएशन आई वांट टू टेक वन सिंपल एग्जांपल। एक आदमी है, उसका सैलरी मंथली 1 लाख है, उसका एक्सपेंडिचर है 10,000, और एक आदमी है, उसका सैलरी 10,000 है, उसका एक्सपेंडिचर 10,000 है। नाउ हु इज सी आई कैन से, और लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई राइट हियर देयर इज पर्सन 1, देयर इज person 1, to make you understand only, there is person 2. इसका सैलरी मंथली 1 लाख है, इसका एक्सपेंडिचर, दिस इज सैलरी, दिस इज एक्सपेंडिचर 10,000 है। there is person 2, उसका सैलरी 20,000 है, यस, उसका एक्सपेंडिचर यस 5,000 है। तो इफ आई आस्क यू हु इज स्पेंडिंग मोर, आपने ये बोलेगा कि ये मोर स्पेंड कर रहा है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ही इज स्पेंडिंग मोर ऑफ हिज मनी। इसका 1 लाख में इसका 10,000 है एक्सपेंडिचर, मतलब 90,000 इसको बच रहा है कि नहीं। आउट ऑफ 1 लाख इज एक्सपेंडिचर इज 10,000, आउट ऑफ 20,000 इज एक्सपेंडिचर इज 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000, राइट। इसके पास बच रहा है 15K, इसके पास बच रहा है 90K। देखो 10,000 when compared to 5,000 looks big, but 10,000 out of 1 lakh, 5,000 out of 20,000। चलो कैलकुलेट करते हैं कितना पर यूनिट का वैल्यू होगा। सो 25% ऑफ हिज सैलरी और 0.25, see I will tell you 0.25 per unit means ये जो ₹1 कमा रहा है उसमें 25 पैसे ये कच्चा कर रहा है, 25 पैसे ये कच्चा कर रहा है। यहाँ पे देखो ये कितना आएगा 0.1, ये कितना कच्चा कर रहा है, हर ₹1 में ये 10 पैसा कच्चा कर रहा है। नाउ यू टेल मी हु इज स्पेंडिंग मोर, दिस पर्सन। If you have per unit value, if you want percentage expenditure is equal to per unit value into 100. How much he is spending? 10% he is spending. 10% of his salary is spending. Now यहाँ पे multiply with 100, then how much you are going to get? 0.25 into 100 is equal to 25%. 25% of his salary is spending, right? तो डायरेक्ट वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे हम।
We will call the direct value as absolute value. If direct value is given, we are unable to draw conclusion. That's why either per unit or percentage value must be given. Right? This is the importance of per unit. See, आगे वाला क्लासेस में we are going to learn that how more it is important. ठीक है? ट्रांसफार्मर में per unit, how to represent transformer in per unit, वो भी देखने वाला है. ठीक है? तो यहाँ पे आ जाओ. How to get per unit quantity? Any per unit quantity is equal to any per unit quantity is equal to direct value, that is also called as absolute value. Absolute quantity. Absolute quantity means the quantity whose per unit value you want by base quantity. By base quantity. Per unit quantity is equal to, per unit value is equal to absolute quantity by base quantity. How to understand? आपको एक एग्जाम में आपको 50 मार्क्स आया, आपने लिखा है एग्जाम 100 मार्क्स के लिए, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हुआ, ये बेस क्वांटिटी हुआ, तो कितना है आपको 0.5 पर यूनिट मींस फॉर एवरी 1 मार्क यू अटेम्प्टेड आपको कितने मार्क्स आए? 0.5 मार्क्स आए. तो 100 मार्क्स खत्म करने से आपको कितना आएगा? 50 आएगा. बस इतना आसान है समझने में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये. राइट? Absolute quantity by base quantity. From per unit, if you want percentage, yes, percentage quantity is equal to per unit into 100. So this is this is per unit I call. लेकिन यहाँ पे एक note point है. The absolute quantity and base quantity must have same units. The absolute quantity and base quantity must have same units. भाई वोल्टेज को वोल्टेज से ही डिवाइड करना पड़ता, तभी आपको कितना वोल्टेज पर ईच 1 वोल्ट यू गेट. करंट विद करंट, रेजिस्टेंस विद रेजिस्टेंस, पावर विद पावर, राइट? इंपेडेंस विद इंपेडेंस, रिएक्टेंस विद रिएक्टेंस, इंडक्टेंस विद इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस विद कैपेसिटेंस. Not voltage with current with the resistance, not like that. Okay? Both absolute quantities, absolute quantity and base quantity must have same units. Absolute quantity and base quantity must have same units, right? Now let us get the per unit quantity of various electrical quantities, per unit values of various electrical quantities. Electrical में क्या क्या quantities हैं? Power है, voltage है, current है, resistance है, inductance है, impedance है, capacitance है. Yet all this, for all this, how to get the per unit we are going to see. Come here. Now per unit quantities of various electrical quantities. Various electrical quantities, right? यहाँ पे देखो, फर्स्ट साइड लाइक पावर. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 तरीके के पावर होते हैं. एक अपरेंट पावर है S, the units are either kVA or VA or MVA. Second one is active power P, watt, kilowatt or megawatt. Third power है reactive power Q, VAR, kVAR or MVAR. So we know that S is called as apparent power. We call this one as apparent power. That is equal to P plus or minus JQ. Plus for inductive loads, minus for capacitive loads will take, right? And its units are MVA. In power system, power is very high. That's why we take generally in MVA. General units are VA. As it is very high, we take it as an MVA, right? S is that. Now next is V is the voltage. Generally that voltage will be in terms of kV. In power system, our voltage level is 11 kV, 33, 66, 220, 132, 220, 400, yes, 400, 765. So very big voltages. KVs, all those are KVs. So voltage in kV I have to take it. Suppose I want power in per unit. Yes, in per unit.
So what to do? S in per unit is equal to S in MVA by S base in same MVA. S base in same MVA, right? S base in same MVA. That is S per unit. Now I want V per unit. So V per unit is equal to V in kV by V base in kV. V base in kV. Yes, we got it. Now I want a current in per unit. Current in per unit. After that, Z in per unit. So here, these two things are very easy. S per unit and V per unit. Later things also easy. But कैसे करना क्या करना देखेंगे एक बार. कैसे करना क्या करना we'll see once. Come here. I want I per unit. I want I per unit. Very simply, I in amperes by I base. I base in amperes. Now you'll get a doubt. Sir, this is very easy, no? Whatever the quantity, that base you take. But I don't want to take I base. See, हर एक चीज का उसका बेस अलग 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 हमारे पास है तो easy है ना, कोई भी कर सकते हैं. I don't want I base separately. And one more thing, if you see the nameplate details of any machine or any power system equipment, उसके ऊपर voltage, power, current ये mention रहता है. ठीक है? तो everything is not mentioned. So only few things are mentioned on the nameplate details. मुझे I base चाहिए, तो I base कैसे लाना? How to get I base? Let us see. How to get I base? Let us see. I want I base. I base मुझे चाहिए. Sir, what you are talking? I'll tell you. What I'm speaking. You'll understand after this. Okay? S is equal to √3 times of V base into, or S is equal to √3 VL IL, or simply I can write for single phase S is equal to V into I. Magnitude I'm talking about. Actually S is equal to V into I conjugate. I'm talking about only magnitude. I'm talking about only magnitude. Now I कितना होगा? I is equal to S by V. I'm talking about single phase. If it is three phase, what would I tell you? If it is three phase, what would I tell you? Right? S is equal to V into I is equal to S by V. मुझे मेरा पास S base है, मेरा पास S base है and V base भी है, तो मुझे I base आ जाएगा ना? I base आ गया, right? Now I per unit is equal to I in amperes by I base. What is I base? S base by V base. S base by V base. Right? So I per unit is equal to come on, I in amperes into V base by S base. देखिए आप यहाँ पे मेरे पास I है, मुझे I per unit चाहिए, तो मैंने I base नहीं लिया सेपरेटली. I base को in terms of S base and V base में कन्वर्ट करके ऐसा किया. तो यहाँ पे टारगेट ये है कि हर एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का बेस S base और V base में कन्वर्ट करना. हर एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का, I repeat, हर एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का बेस क्वांटिटी मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एस बेस एंड वी बेस. हमको आ गया आई पर यूनिट. इससे पहले एक नोट पॉइंट देना चाहता हूं मैं यहाँ पे. ऑलवेज पर यूनिट क्वांटिटीज आर पर फेज क्वांटिटीज ओनली, राइट? मतलब थ्री फेज का पर यूनिट क्वांटिटी कोई एग्जिस्ट नहीं रहता. कभी कभी थ्री फेज का पर यूनिट एंड सिंगल फेज का पर यूनिट दोनों इक्वल हो सकता है, लेकिन पर यूनिट क्वांटिटीज आर ऑलवेज पर फेज क्वांटिटीज. आई राइट हियर नोट one of the very important note point, that is per unit quantities are per phase quantities always. Per phase quantities always. Per unit quantities are always per phase quantities. ऐसा थ्री फेज पर यूनिट वैल्यू कुछ नहीं रहता. पर यूनिट मींस पर फेज ओनली. पर यूनिट मींस पर फेज ओनली. मुझे जेड पर यूनिट चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जेड? जेड मींस इंपेडेंस. जेड मींस इंपेडेंस. इंपेडेंस यूनिट्स आर इन ओम
and it will be equal to R plus or minus Jx. Whether it is plus Jx or minus Jx, that depends on the inductor or capacitor. If it is inductive circuit, it is R plus Jx. If it is capacitor circuit, it will be R minus Jx. Now मुझे Z per unit चाहिए. Z per unit is equal to Z in ohm by yes Z base in ohm. Z base in ohm. लेकिन मेरे पास Z base नहीं है. मेरे पास काफी दो ही bases है. One is S base and one is I base. S base and I base. चलो कैलकुलेट करता है. तो मुझे ये बताइए S base is equal to yes V base into I base. V base into I base. For single phase, I'll extend this concept again for after this one for three phase also. Three phase. In three phase again we have two configurations: star configuration and delta configuration. Now S base is equal to, अगर आपके पास एक इम्पिडेंस है तो इम्पिडेंस में करंट ऑफ I फ्लो हो रहा है, इम्पिडेंस का वैल्यू Z है, तो S is V is equal to I into Z ना, so I is equal to simply V by Z ना, V base by Z base. मैंने खाली ओम्स लॉ लगाया यहाँ पे, मैंने ओम्स लॉ लगाया. We know that. Let me write a note point here if you want. आपके पास एक Z है, Z in ohms. अगर आप वोल्टेज ऑफ V प्रोवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज ऑफ V आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें करंट ऑफ I फ्लो होगा, I will flow, then I current is equal to V by Z in ohms amperes, right? Z in ohm amperes. वही लगाया मैंने. I base is equal to simply V base by Z base, right? Now S base is equal to क्या है हमें? S base is equal to V base square by Z base. तो Z base is equal to क्या होगा? Z base is equal to V base square by S base होगा. V base square by S base. Now अभी देखो Z per unit क्या होता? Z per unit is equal to Z in ohms by Z base. What is Z base? V base whole square by S base. Yes, Z base is equal to V base square by S base. Now Z per unit कितना होता? Z in ohms into S base by V base whole square. Yes, this is the formula to get Z base or Z per unit. This is the formula to get Z per unit. So I told you already that I want every per unit value in terms of S base and V base. I'm not going to use a separate Z base. See, initially when we don't know the formula, when we are deriving the formula, we use Z base only. But our aim finally is to represent Z base, any base in terms of S base and V base. Any base in terms of S base and V base, right? Yeah. Let's go to the next one. That is, now मैं यहाँ पे एक question दे रहा हूँ. Example, if R is equal to 1 ohm, is saying that R is equal to 1 ohm, right? And applied voltage of of 10 volt, comma, power of I can say 100 volt amperes, then R per unit is equal to dash. R per unit is equal to dash. सर आपने Z पर यूनिट बताया, I पर यूनिट बताया, V पर यूनिट बताया, S पर यूनिट बताया, लेकिन R पर यूनिट बताया नहीं है. चलो देखते हैं. Z is equal to R plus JX. This is in ohms. Now Z per unit का फॉर्मूला क्या है? Z in ohm into S base by S base by V base square. Yeah, S base by V base square into S base by V base square.
सर हमको ये पता है, लेकिन R पर यूनिट कैसे पता करना? R पर यूनिट के लिए सेपरेट R बेस नहीं होता। पहले लिखते हैं, हमको पर यूनिट चाहिए, तो R पर यूनिट इज इक्वल टू R इन ohms बाई R बेस। लेकिन सर आपने R बेस कैसे फाइंड आउट करना नहीं बताया। सेपरेट R बेस नहीं होता। R बेस इज इक्वल टू X बेस इज इक्वल टू Z बेस। ये तीनों का बेस सेम ही रहेगा। सर हाउ कैन यू टेल दैट? हाउ कैन यू टेल दैट R बेस, Z बेस, X बेस सेम रहेगा? All three having same units, ohm, ohm, ohm. You see, what are the units of this? Resistance, ohm. Reactance, ohm. Impedance, ohm. Same unit quantities are going to have same base. Same unit quantities are going to have same base. Now the answer is R per unit is equal to R in ohm 1 by, yes, I have to put up Z base. How much is the resistance given? Resistance is 1 ohm. Yes, 1 ohm divided by Z base. What is Z base? Z base is equal to, yes, Z base is equal to, come on, V base square by S base. What is V base square? 10 square. Yeah, V base, how much given? How much is the voltage given? Voltage given at 10 volts and the power of 100 VA. Power of S base is 100. Let's take S base as 1000, so that we'll get some difference of answer. Yes, yeah, 1000. Therefore, how much this is? 100 by 1000. It is 0.1. Now R per unit is equal to 1 by 0.1. This is 10 per unit, not ohms. 10 per unit, right? 10 per unit. So that much simple it is. In this simple way we are going to find. Now one more note point I want to tell you. See, S base we have that is equal to P base, that is equal to Q base. See, means active power, reactive power, apparent power are not going to have separate bases. All three bases are equal because all three are powers only. Maybe to spell the units are different. This one we call it as an MVA. The units of this one are in MVA. This one are in megawatts. This one units are in MVAR. You may be thinking, sir, units are different. No. Units may look different, but all three are powers only. As simple as like S is equal to P plus JQ. S is equal to P plus JQ, which is similar to Z is equal to S, which is similar to Z is equal to R plus JX. Z is equal to R plus JX, right? This is similar to R plus JX. Maybe this R is resistance, this X is reactance, but end of the day all are ohms. These all are powers. Now, right, let me write some formula, that is P per unit. P per unit is equal to P in megawatt by P base, but there is no separate P base. We have to take S base, that is in MVA, right? Now Q per unit is equal to Q in MVARS by, yes, actually I have to take Q base. There is no separate Q base, therefore S base only. S base in terms of MVA. S base in terms of MVA, right? So these are the formulas. Slowly we are going towards the derivation of all the formulae. I am going to extend this topic for delta and star connections for 3-phase also, right? Delta and star for 3-phase also. See, for 3-phase, for star connection if it is, observe. See, for 3-phase star connection, what are the formulas we know? We know that S is equal to √3 times of V line into I line. For star, V line is equal to √3 times of V phase, and I line is equal to I phase. I line is equal to I phase, right? For star connection. Yes or not? For star connection. Now, if I want Z per unit, Z
per unit. Carefully observe. I told you previously that by default 3 phase per unit quantities are per phase only. I told you that by default per unit quantities are per phase only. Therefore what I do is Z in ohm by Z base. Z base in ohms. Right? Now I want Z base. The Z base will be, yes, V base square. I have to take V per phase only, not line. Why? Because per unit quantities are always per phase quantities, right? And generally our voltage will be in terms of kV. So let me take here V phase. So V is in kV. Now let me write here V line and V phase are in kV, kilovolts, and S is in MVA. K stands for 10 to the power of 3, M stands for 10 to the power of 6. Now here when I am taking Z base, definitely see resistance, inductance, capacitance are always per phase quantities. There is no line to line resistance, there is no line to line inductance. Only voltage, current, power, these only 3 things are going to have difference between line and phase. Not always, that depends on the circuit. But see, only these 3 variables having the difference of line and phase, single phase and 3 phase. Remaining all are per phase quantities only, right? Yeah. V phase whole square by S base single phase I have to take. S base single phase, right? Now, if I am taking this base in MVA, this voltage is in kV, therefore this kV whole square will be 10 to the power of 6. Here it is in MVA, it is in 10 to the power of 6. So this automatically will get cancelled. Now I see means if voltage is in kV and S is in MVA, I need not to put those values. Why? Because that kV square, K square, 10 cube square, 10 to the power of 6. Downside it is S base, it is also in 10 to the power of 6, both will get cancelled. Therefore need not to take those. If voltage is in kV and S base or S is in MVA, we need not to put those values. Direct values we get here. What do I mean? I'll tell you. I'll tell you by taking one example, right? Now Z base is equal to Z base in ohms is equal to, चलो एक काम करते हैं, मैंने स्टार कनेक्शन के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टार कनेक्शन के लिए बता रहा हूँ 3 फेज. मैंने बोला कि ऑलवेज पर यूनिट क्वांटिटी सर पर फेज. ये जो V फेज होल स्क्वायर है ना, मैं क्या करता हूँ, एक 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे. क्यों कर रहा हूँ आपको पता चलेगा. भाई अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि वी शुड नॉट चेंज द वैल्यू शुड नॉट गेट चेंज. तो 3 इंटू S बेस सिंगल फेज बन जाएगा. 3 इंटू S बेस सिंगल फेज हो जाएगा, है कि नहीं. 3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज इज इक्वल टू 3 फेज पावर ना, राइट. या व्हाट इज द रिलेशनशिप हियर. देखो S इज इक्वल टू √3 VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ V फेज. यहाँ पे और भी मैं लिखता हूँ, यहाँ पे और भी लिखता हूँ कि S3 phase is equal to 3 times of S single phase in a balanced resistor. 3 phase का power is equal to 3 into 3 times of single phase power. 3 phase power is equal to 3 times of single phase power. है कि नहीं? No, देखिए यहाँ पे ये 3 को मैं √3 होल स्क्वायर लिख के ना √3 V phase होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं. भाई ये हुआ S base 3 phase हो गया, ये S base 3 फेज बन गया. नाउ Z base in ohm is equal to √3 into V phase is nothing but V line to line whole square by S base yes 3 phase. देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कंफ्यूज नहीं होगा. ये दिस इज ओनली फॉर स्टार कनेक्शन. फॉर डेल्टा कनेक्शन इट विल बी डिफरेंट अगेन. ओके, मैंने फेज वोल्टेज लिया, पर फेज पावर लिया, क्योंकि पर यूनिट क्वांटिटीज आर ऑलवेज पर फेज क्वांटिटीज. दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर सेम. या यहां से मैंने ये लाया, कोई चेंज नहीं है. ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया, नीचे में 3 मल्टीप्लाई किया, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ. मतलब फॉर स्टार कनेक्शन इफ यू वांट Z base, you take line and 3 phase quantities are per phase and
per phase quantities, both are going to give the same answer to you. This is an advantage, right? I'll tell you by taking one problem. Right? Yeah. Example: 11 kV, 100 MVA, star connected winding is having per phase impedance of Z is equal to J 15 ohm, then find Z per unit. So I told you that Z per unit is equal to Z in ohm by Z base in ohm. Z in ohm by Z base in ohm. Z ओम उसने दे दिया, J15 है, तो Z बेस हमें चाहिए, तो Z बेस इज इक्वल टू, अगर आपको Z बेस चाहिए डायरेक्टली 11 स्क्वायर बाई 100 कर लेना, V लाइन होल स्क्वायर बाई, सी ये 3 फेज पावर है, ये लाइन वोल्टेज है। सर आपको कैसे पता वो लाइन वोल्टेज है, 3 फेज पावर है? If it is single phase, that fellow will clearly mention. अगर ये per phase voltage है तो he will write there as if the phase voltage is 11 kV. If not mentioned, अगर वो कुछ नहीं दिया वोल्टेज के बारे में, by default हम उसे लाइन वोल्टेज लेते हैं, ये थंब रूल है। ये 100 MVA 3 phase power है। If it is single phase power, the fellow will clearly mention a single phase power of 100 MVA. ऐसा कुछ mention नहीं है, इसलिए वो ये लाइन वोल्टेज है, ये 3 phase है। और सर मैं पर फेज ही लेता हूं तो कितना लेना पड़ेगा? यहाँ पे 11/√3 होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 100/3 लेना पड़ेगा। फिर भी आपको सेम आंसर आ रहा है ना, मींस अगर आप पर फेज लिया तो भी Z बेस इज इक्वल टू 11 स्क्वायर बाई 3/100/3, 3 got cancelled, we are left with 11 square by 100, right? 11 square by 100 means either you take line voltage and 3 phase MVA, per phase voltage and single phase MVA. Answer is same. If it is same, why I have to do this one? My time waste. Why? Because from line voltage I have to get the phase voltage, from 3 phase power I have to get the single phase power. Anyhow, those were getting cancelled. Na? Always I prefer this one. Directly I can take. This is valid only for star connection ना. This is valid only for star connection. इसलिए देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Z per unit is equal to J15 by 11 square by 100, that is equal to J into 15 into 100 by 11 square. That's all. Right? This way we can do. Now star connection तक okay. Star connection मतलब star connection में आप वोल्टेज स्क्वायर लाइन वोल्टेज नीचे 3 फेज एमवीए, फेज वोल्टेज स्क्वायर सिंगल फेज एमवीए, दोनों में कोई भी ले लो आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। लेकिन डेल्टा के लिए देखना पड़ेगा अभी, तो कौन सा लेने से आपको आसान रहेगा कैलकुलेशन में? लाइन स्क्वायर बाई 3 फेज पावर, क्योंकि फेज में कन्वर्ट करना फिर लेना फिर कैंसिल होकर वही आएगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि देखो कुछ क्लासेस के बाद बच्चे क्या सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि तो जेड बेस कोई भी हो, यहाँ पे वी लाइन ले लो, यहाँ पे एस बेस 3 फेस ले लो, ये सही नहीं है। दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टार कनेक्शन। चलो अभी डेल्टा कनेक्शन देखते हैं। यस, सी आई राइट हियर, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, वैलिड ओनली फॉर स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन के बारे में अभी लर्न करते हैं। लेट्स कम 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सपोज इफ इट इज डेल्टा कनेक्टेड, तो देखो डेल्टा में आपको ये पता है कि इन डेल्टा यहां पे भी पावर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ V लाइन इनटू I लाइन। S इज इक्वल टू √3 VL है, बट VL इज इक्वल टू V फेज हो जाएगा, IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ I फेज हो जाएगा। ये
राइट, L is equal to root 3 times of I phase हो जाएगा. Now Z per unit is equal to what is the formula now? Z in ohm by Z base in ohm. Now ये वाला Z base पर यूनिट कैलकुलेट करने में ऑलवेज पर फेज क्वांटिटीज लेना है, लेकिन स्टार कनेक्शन में क्या हुआ, आप पर यूनिट लाइन वाला ले लो या फेज वाला ले लो, आंसर आपको सेम ही आ रहा है. इसलिए हम लाइन वाला ले रहे हैं क्योंकि अपना वर्क कम हो जाए. यहाँ पे चेक करते हैं अगर वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसा कर सकते कि नहीं कर सकते ना. जेड बेस क्या होगा, जेड बेस इन ओम इज इक्वल टू वी बेस, या वी बेस पक्का पर फेज लेना चाहिए बाई एस बेस, या पक्का सिंगल फेज लेना चाहिए. देखो नाउ मैं ऐसा कर सकता हूं यहाँ पे इंटू 3/3 नहीं कर सकता हूं क्योंकि फेज वोल्टेज इज ऑलरेडी इक्वल टू लाइन वोल्टेज. अब कुछ नहीं करने का, ये तो एस बेस सिंगल फेज ही रहेगा ना, एस बेस सिंगल फेज रहेगा. स्टार कनेक्शन में क्या था, V line is equal to root 3 times of V phase. That's why I multiplied with 3 and divided with 3. Nothing got changed. Here line voltage is equal to phase voltage already, right? तो यहाँ पे डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होता इक्वल, लेकिन ये देखो एस बेस सिंगल फेज ही है. तो Z पर यूनिट क्या हुआ, Z पर यूनिट is equal to Z in ohms by Z base, that is V line square or V phase स्क्वायर इनटू एस बेस सिंगल फेज ही है. यहाँ पे डायरेक्ट लाइन क्वांटिटीज नहीं लेने का. अगर आपको लाइन क्वांटिटीज लेना है, सर मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, उधर लाइन लर्न किया, इधर भी मैं लाइन ही लर्न करना चाहता हूँ, तो ये लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम ही है. एक काम करो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 3 डिवाइड करो, तो Z पर यूनिट इज इक्वल टू 1/3 बाहर लगाओ, ये Z इन ओम इनटू ये S बेस कितना हुआ, S बेस अभी 3 फेज हो गया बाय V लाइन स्क्वायर, V लाइन स्क्वायर. देखो the only difference between the previous formula of a star connection and the present formula of delta connection is वहां पे ये 1/3 नहीं रहेगा, यहाँ पे ये 1/3 रहेगा. When 1/3 लेना पड़ेगा when you are taking this one as 3 phase, this one as line. Anyhow, line voltage and phase voltage both are equal. I told you the graph. Right? This is how we learn concepts of I can say this power system. Power per unit concepts are बहुत important है क्योंकि definitely one question यहाँ पे क्वेश्चन है, या देखो यहाँ पे क्वेश्चन है of per unit which was asked previously in JKSSB JE examination in electrical paper. Read the question carefully and let's solve it. Read the question. The per unit impedance of a circuit element is 0.3. Yeah, he's saying that per unit impedance Z per unit is equal to वो बोल रहा है कि 0.3. ठीक है. If the base kV and base MV are halved, वो क्या बोल रहा है, पहले Z base था, Z base 1 ले लो. Now Z base पहले एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ 0.3. पहले S base था, वो S1 ले लो आप, और V base था, ये V1 ले लो पहले वाला. उसने क्या बोल रहा है, the base KV and MV are half now, वो हाफ कर दिया. Now S base new कितना हुआ, S1/2 हुआ, S base new है ये. V base new कितना हुआ, V base new हुआ V1/2. दोनों को उसने हाफ कर दिया. Then the new value of per unit impedance of the circuit is, उसने new per unit value कितना आएगा पूछ रहा है. देखो Z per unit आसान प्रॉब्लम है. Z per unit is equal to Z in ohms by S Z base. Z base is nothing but S base by V base square, right? V base square. Now वो क्या बोल रहा है, ये जो पुराना वैल्यू है ये 0.3 है, ये Z ohm ऐसा ही रहने दो, Z ohm ऐसा ही रहने दो, वो वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा. वो क्या बोल रहा है अभी, ये जो S base है ना, S base को उसने हाफ कर दिया. तो देखो
मुझे न्यू पर यूनिट चाहिए, ऐसा करता हूं मैं, ये ओल्ड वाला पर यूनिट है, ये ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, उसको क्या चाहिए, जेड पर यूनिट न्यू चाहिए। आपने अगर बेस चेंज किया तो पर यूनिट वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो 10 है, बेस 100 है तो 0.1 है, 10 है, बेस 50 है तो 0.2 है। अगर बेस चेंज हो गया तो डेफिनेटली पर यूनिट क्वांटिटी विल चेंज, डेफिनेटली पर यूनिट क्वांटिटी विल चेंज। यहाँ पे आ जाओ, जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड इन ओम इनटू एस बेस न्यू बाय V बेस न्यू होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो Z इन ओम इनटू S बेस न्यू कितना वैल्यू दिया उसने, Z पर यूनिट ओल्ड उसने दिया 0.30 दिया, ठीक है। S बेस न्यू कितना, S बेस ओल्ड बाय 2 ओनली ना, he told that it is half by this V base is also it is half, therefore V base old by 2 whole square, V base old by 2 whole square। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। Now देखो, so Z per unit new is equal to Z in ohms into S base old by, ये 2 2 4 हो गया, 4 2 8 हो जाएगा, yes yes or not, check it properly, yes, yeah, this is let me put here S base, this is 1 by 2, ये हुआ V base old whole square by 4 हो जाएगा ये। let me rewrite that is, let me rewrite it, Z in ohms into Z base old into 0.5 by V base old whole square into 0.25। तो ये वाला वैल्यू प्रीवियस वाला ये है ना, Z ohms into Z base old by, sorry, not Z base old, S base, this is S base old, I wrote it wrong, this is not Z base, this is S base, S base old, ये वाला nothing but previous per unit value है ना, therefore 0.3 into 0.5 by 0.25, 0.5 2 times it is gone, it is 0.6 per unit new। देखो इतना आसान है, आपको कोई बड़ा फार्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक फार्मूला है वो आप याद करने से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स है तो फार्मूला, सी sometimes we may forget the formulas, new formulae, but if we have concepts, clear cut concepts ना, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फार्मूला हम भूल गए तो भी ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वे ECP पे आपका जेई का क्लासेस होगा, हर एक पॉइंट टू पॉइंट वेरी क्लियरली विल टीच यू, एंड आपको प्रीवियस वाला प्रॉब्लम्स भी कराएंगे हम यहाँ पे, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।